Hi, all the students. Welcome to Icon. Welcome to Icon Says Cat. My name is Anil Chaudhary, and today we are going to have the first session on vocab development. Students, whenever English comes and wherever English comes, the most important thing is vocab. We need to first understand the meanings of the various words. Unless we understand the meanings, we will not be able to catch the crux of a passage, and we will not be able to solve the other types of questions as well. तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है to understand the meanings of the words. And I see so many students, they are generally concerned about, sir, thousands of words are there. हजारों words हैं. इन सब words के meaning सर कैसे बयात होंगे? तो students को मैं देखता हूँ कि हमेशा उनकी ये चिंता होती है कि सर thousands of words, how we people have to memorize them. It will not be possible for us. सर हम एक word याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं. Yes, these kind of concerns are there. And I think students ये video आपको उन सारे कंसर्न से बाहर निकालेगा. This video will actually talk about what kind of approach we need to keep in mind as far as vocab development is concerned. In this video, students, we are going to discuss a lot of things. मैं आपको जो approach बताऊंगा, and I believe that for the first time, you people will be listening to such an approach. And believe me, students, whatever things I'll be talking about, आप इस बात पर चलना start करो. Automatically आपको लगेगा कि ये आने वाले 2-3 महीनों में a lot of confidence you were able to develop. Students try to understand. मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, जब भी vocab की बात करते हैं, they just consider one thing. सर कोई भी नया word आ जाए, उसे बस रट्टा मार लो, by heart कर लो, and the job is done. Believe me, students, सिर्फ by heart करने से काम नहीं चलेगा. And this is not only the meaning of the word which is important, but along with the meaning, there are multiple other things जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. So comprehensively we need to understand vocab. आज की ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, and this is not only about one class. ये तो students एक क्लास है, but इसके आगे भी we are going to take so many classes where we will keep discussing lots of vocab. Anyway, students, start करते हैं आज के सेशन को, and please इस सेशन को productive अगर बनाना है, what is more important is you people will have to sit properly on table and chair and proper एक कॉपी और पेन लेकर बैठो. Do understand, जब भी आप कोई ऑनलाइन वीडियो देखो, what is more important is self discipline and self drive. Believe me, students, अगर आप self discipline के साथ बैठोगे, ये ऑनलाइन क्लास भी उतनी ही प्रोडक्टिव होगी जितना कोई ऑफलाइन सेशन. ओके, तो बैठ गए, डन, स्टार्ट करें. चलिए. Now, students, coming on mastering vocab, we will discuss the importance of vocab, the types of questions based on vocab and how to master it. और उससे भी पहले सबसे important what we are going to discuss is whenever we come across a new word, what approach we people will have to keep in mind. Generally, students, मैं देखता हूँ students are concerned about just the meaning of the word, but students try to understand there are 6 things which are important, and one by one I'm going to discuss all these things. You will, students, actually come to know कि जब ये सब चीजें हम discuss करेंगे, on the basis of these things only the questions actually come in the question papers. I do understand कई सारे question papers ऐसे होते हैं where possibly no direct question on vocab is there, but still, students, we cannot undermine the importance of vocab. So whenever you come across a new word, the first thing is we need to understand the spelling of the word. I do understand, especially जितनी भी English medium schools के students हैं, we often take spelling for granted. हमें क्या लगता है सर स्पेलिंग कौन सी बड़ी बात है? Okay, and that is the reason we don't focus on it. But sometimes we have seen, not in CAT, but there are some papers where even today direct questions are based on spelling. So anyway, students, उसकी भी testing मैं अभी करूँगा, and this class is actually a demo session. Okay, not for you people, it is a demo session for me. I will come to know where you people actually stand. Then we need to understand the meaning, the tone of the word. Grammar की भी students थोड़ी सी understanding होनी चाहिए. And when I talk about grammar, we need to understand that a particular word belongs to which part of speech. उस पर भी थोड़ा सा अपन discuss करेंगे. Pronunciation and sentence formation. So one by one, students, we people are going to discuss about these 6 points. अब सबसे पहला, what is the spelling? And students, why spelling becomes very, very important. I do understand, वैसे तो काफ़ी सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स अभी तक आते आते हमें याद हो भी जाती है. And try to understand one thing, हमने स्पेलिंग्स को कभी भी बैठकर by heart नहीं किया, but over the period of time, because of repeated use,
स्पेलिंग्स अपनी आप स्टूडेंट्स आ जाती है, isn't it? In the same manner, okay, English जो words हैं उनके meanings हैं and the multiple other things which I'm going to discuss now over the period of time, आप बस स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्लोर करो and moreover what is more important is you people have to expose yourself towards more and more English. आप अपनी डे टू डे लाइफ में जितनी इंग्लिश देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, उतना स्टूडेंट्स द चांसेस ऑफ improvement will be there. So English is a language. It is actually not a subject, understand. तो इंग्लिश को कमरा बंद करके बड़ा सीरियस होकर घंटों तक पढ़ना, this approach I don't think is suitable. What is more important is make English a part and parcel of your life. Okay, इस पर और टिप्स मैं देता रहूँगा, पर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेलिंग की. Do understand, स्पेलिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चंस may come and sometimes ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश में अलग होती है, तो वी ऑफन गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स इट हैपन्स देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर एक्चुअली homonyms, homophones. That means similar sounding words. The spellings are one and the same, but possibly, the sounds are one and the same, but possibly the spellings are different and the meanings are also different. तो ऐसे जो similar sounding words होते हैं, उनमें भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूजन होता है. I'll take a few example to make you understand. चलो सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना इस वर्ड का स्पेलिंग. स्टूडेंट्स कैलेंडर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर? अरे सर, इतना इजी वर्ड भी कोई पूछता है क्या? बट दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग. यस, माइंडेड, DAR. कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो यहाँ पर DER लिखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. सो कैलेंडर, DAR, दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग. Second, students, what is the spelling of vacuum? Vacuum. I'll give you two options. One option is this, and the second option is VACWM. Okay? Sorry, not E. WM. Come on, tell me, students. The first option is VACCUM, and the second is VACWM. So, which is the correct spelling of vacuum? I hope you people understand what is the meaning of vacuum. So can you tell me what is the correct answer? I think ज़्यादातर बच्चों ने सोचा होगा कि this is the right answer. But students, this is wrong. The correct spelling of vacuum is VACWM. Yes, exactly. और students आप देखोगे ऐसे बहुत सारे words हैं जहाँ पर हम लोग often mistake commit करते हैं. चलिए, let me take one more example. मैंने अभी just बोला था homonyms, similar sounding words, and we often get confused in that also. तो चलो एक छोटा सा example मैं लेता हूँ on a pair of homonyms. So come on, tell me, one word is complement and the second word is complement. और इसकी स्पेलिंग में PLEMENT. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, PLIMENT and PLEMENT, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस? यस, यू पीपल कैन थिंक. यस, आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता चल गया होगा, isn't it? Now coming on the first compliment, it actually means to praise, isn't it? किसी की तारीफ करना, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. Yes, please accept my compliments. I compliment you for your success. So compliment, बधाई देना, तारीफ करना, praise करना. So that is the meaning of compliment, isn't it? चलिए, अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बताऊं, बट उसके पहले you people have to tell me कि praise को इंग्लिश में और क्या कहते हैं. Can you give some more synonyms of praise? Yes. Wherever you come across a new word, think about more and more words. The moment you keep thinking, आप देखोगे कम टाइम में vocab आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. So praise, yes, can you give some synonyms? एक तो बहुत ही सिंपल सा synonym है, appreciate, yes. There is one more word जो A से start होता है. Yes, what is that? Yes, indeed, it is admire, absolutely. Then students, we can also take a word like laud. Okay, laud. Laud is also to praise. So when I say what a laudable performance, that means what a praiseworthy performance. Okay, तो जो तारीफ लायक है उसे अपन कहते हैं laudable. One more word can be taken as comment, commendable, comment. ध्यान रखना, comment नहीं लिखा है, it is comment. When I say comment, comment का मतलब भी होता है to praise. And then students, one very simple word, hail can be there. Okay, और भी स्टूडेंट्स अगर अपन सोचें तो बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं.
चलो एक वर्ड में और ले लेता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. ओवेशन. I think this word ovation, you people might have heard it, and many times in the reality shows we see standing ovation. जहाँ पर कोई परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग होता है तो पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है, स्टैंडिंग ओवेशन. So that is what ovation is. Ovation का मतलब भी to praise, understand. So all these are synonyms of praise, right? And this means compliment. अब second compliment, इसका मतलब होता है students to complete. Okay, the meaning is to complete. For example, if I say a good teacher and a good student complement each other. अगर teacher अच्छा है but if the students are not good, results won't come. So a good teacher and a good student complement each other. So that becomes complement, to complete. Now students, आपने geometry में कभी सुना होगा complementary angles के बारे में. Where the sum of two angles that becomes 90 degree, it is known as complementary angles. वहाँ पर भी जो spelling है, that is the second one. Now let me take one more example. For example, I went to the market and I bought a laptop. तो जब मैंने लैपटॉप खरीदा, the shopkeeper gave a headphone complimentary. Isn't it? कई सारे शॉपकीपर्स होते हैं जो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं. Isn't it? Now tell me students, when that person gave a headphone complimentary, तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर आनी चाहिए? PLI और PLE, which is correct? Yes? I think थोड़ा सा confusion है. Yes, यहाँ पर students the correct answer is the first one, complimentary, because that headphone which that person is giving, that is as a token of appreciation. वो students एक appreciation का token है. It is just actually praising you that आप यहाँ से खरीद रहे हो. So that is the reason I'm just giving you as a token of appreciation. Therefore, the spelling will be the first one. अब आप just imagine करो, if you come across such a situation and both the spellings are given and we don't know कि कौन सी spelling कहाँ पर set होती है. That is the reason student spelling plays the most important role. एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ओके, आई गेस सभी को पता भी होगा बट फिर भी होल्ड ऑन. एक होता है प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज प्रिंसिपल. इजंट इट? आई थिंक सभी स्टूडेंट सोचेंगे सर नाउ द स्पेलिंग इज सो सिंपल. प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कौन सी बड़ी बात है? वी डू अंडरस्टैंड ये वाला जो प्रिंसिपल होता है या स्कूल का प्रिंसिपल. इजंट इट? एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल, यस, इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर अ डॉक्ट्राइन, सिद्धांत. ओके, यस, सिद्धांत को और क्या कहते हैं? दिस प्रिंसिपल, ओके, इट कैन बी कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन. व्हाट एल्स? इसे स्टूडेंट्स हम लोग और कह सकते हैं टेनेट्स. प्रिंसिपल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टेनेट्स एंड वन मोर सिनोनिम कैन बी टेकन एज कैनन. कैनन, कैनन का मतलब भी होता है प्रिंसिपल. अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं ये जानबूझकर कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ? Because students, what is more important is you people have to keep listening to these words. I do understand जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो मेजरली, okay, the exams are MCQ based, objective questions. You're not supposed to write something. If we had to write something, possibly मुझे वहाँ पर चीज़ों को बयान करना पड़ता. But try to understand, options will be given to you. अगर हमने किसी वर्ड को कभी सुना है तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस में उसको रिकॉल कर पाना will become easy for us. So that is the reason whenever I take any class, तो students किसी भी word के साथ जितने possible synonyms होते हैं, I keep discussing those as well. But anyway, परेशान नहीं होना. ये सारे words हमें एक दिन में बैठकर we are not supposed to by heart to understand. Now coming on students, the second principle, we people very well know this. अब एक छोटा सा example मैं लेता हूँ and you people will have to decide which principle is going to come in that example. This is the first one and this is the second one. चलिए, मैं students अगर कहता हूँ the dash matter is to decide, okay, whatever. आगे की कहानी छोड़ देते हैं. Students, the question is the principal matter. The principal matter is to decide, okay, whatever. Now tell me students, when I talk about the principal matter, which principle will come here, first or second? I think बहुत सारे students यहाँ पर सोचेंगे first one, but students try to understand. Here the correct answer is second one. Yes, try to understand. When I talk about this principle, that does not mean only the principal of a school or a college. Principal का मतलब होता है the main, the key point, the main thing is known as principal. So students, when I say the principal matter, I mean to say that
the key matter or the main matter is. Okay, the most important matter is. तो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है the most important one, okay, or the key one. So that is the reason second becomes the correct answer here. My suggestion to all the students, spelling को भी taken for granted मत लेकर चलना. Wherever you come across a new word, the first thing is you people will have to understand what is the spelling of the word. एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. Students, can you tell me what is the difference between raise? There is one more raise and there is one rage. Okay? Yes, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? Raise, raise and rage. ठीक है? पता है? This raise is to build, isn't it? Construct करना, build करना, किसी बच्चे को बड़ा करना, raise a child, okay? Raise an empire, raise a building, whatever. Second, ये जो rage है students, I guess कई सारे students को इसके बारे में पता होगा. The second rage, this actually refers to anger, गुस्सा. Okay, this refers to anger, and anger को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? Fury. और क्या कहते हैं students? Wrath. Yes. And then students, if I talk about raise, yes, इसे आप relate कर सकते हैं. Razor, razor. So raise actually stands for to destroy. Okay, it actually stands for to destroy. Absolutely. So raise is to destroy. Can you give us synonyms, a few synonyms of destroy? अरे सर इतने कितने वर्ड्स आप बताओगे? बेटा अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है. आपके जस्ट होल्ड ऑन और थोड़े पेशेंस के साथ पढ़ो. एंड लेस टाइम यू पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू राइज हाई. एनीवे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय एक होता है डेमोलिश. डेमोलिश अच्छा एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो आर से स्टार्ट होता है. कैन यू गेस? अ वेरी सिंपल वर्ड विच स्टार्ट्स विथ आर. यस, रुइन. सुना है रुइन? यस. एक्चुअली सर ये सारे वर्ड्स हमने सुने होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल. The reason is our mind is not oriented for that. So now what has to be done? Keep asking questions. So whenever you come across a new word, keep asking questions. What can be the possible synonyms? What can be the opposite of these words? ऐसे students आप देखोगे आपकी vocab बहुत strong होगी. तो सबसे पहले students मैंने spelling पर discuss किया. You people should not take it for granted. Whenever you come across a new word, focus on the spelling. चलो कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं स्पेलिंग्स पर. कुछ क्वेश्चंस यू पीपल हैव टू गेस व्हाट इज द करेक्ट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड? आई नो शायद कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड. रीइटरेट, प्रेरोगेटिव, निमोनिक, एंटरप्रेन्योर. आई गेस स्टूडेंट्स को पता होगा. एनीवे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. यू पीपल हैव टू जस्ट गेस. ओके, कौन सी स्पेलिंग गलत है? द करेक्ट आंसर हियर इज यस, सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ TER इट हैज टू बी TRE, एंटरप्रेन्योर. ओके, बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है. इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक. M विल बी साइलेंट हियर. ओके, डन. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, बाकी सबके मीनिंग्स आप लोग पता करें. कीप नोटिंग ऑल दी वर्ड्स. Hello, one more question based on spelling, and you people can pause the video, think about the answer, and then you can proceed. Which of the following four words is wrongly spelled? Exaggeration, extraneous, juggernaut, and extravagant. Yes, yes, yes. I guess ये कई सारे students को पता चला होगा, even if आपने इस word को नहीं देखा हो. The correct answer is juggernaut. Actually, students, the correct spelling of juggernaut should be GGERNAUT. So this becomes the spelling of juggernaut. अब सर इसका मीनिंग क्या होता है ये भी बता दो. Anyway, students, try to understand when I talk about juggernaut, इसको आप रिलेट कर दो. उड़ीसा में there is a place called Puri. It's a very holy place. जहाँ पर we have the temple of Lord Jagannath. And आप लोगों ने सुना होगा in the month of July वहाँ पर एक चैरियट प्रोसेशन, रथ यात्रा निकलती है. एंड जगन्नाथ भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है उसे बीच में रोका नहीं जा सकता. ओके, इट नेवर स्टॉप्स इन बिटवीन. तो जगन्नाथ इज अनस्टॉपेबल. इन द सेम मैनर जगरनॉट, इट एक्चुअली मीन्स अनस्टॉपेबल. अनस्टॉपेबल. ओके, आई विल मेक वन एग्जांपल. जैसे जैसे ऑल द अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया,
all the opposition parties in India are trying to stop Modi's political juggernaut. So Narendra Modi has become unstoppable. He is winning elections after the elections. Okay, so now if I say all the opposition parties, they are actually trying to stop Modi's political juggernaut, unstoppable. That is the meaning. Okay, I guess अब इस वर्ड का मीनिंग तो आप कभी भी नहीं भूलोगे. चलो, one more question based on spelling. उसके बाद दूसरी चीजों पर चलते हैं. So which one is the correct spelling? The correct answer here is indeed third option, millennium. Millennium का मतलब होता है 1000 years. Okay, 100 years को century कहते हैं, 10 years को decade कहते हैं, and millennium का मतलब 1000 years. So all the students, the first thing is you people should understand the spelling, and after that you people have to focus on what is the meaning of the word. And do understand, when I talk about the meanings are of two types. One, the dictionary meaning. Answer sunna, the most important area. And the second type of meaning is the contextual meaning. Contextual meaning. एक होता है students, the meaning which is directly given in the dictionary. And the second is the contextual meaning. When I talk about the context basically stands for a situation. एक ही word, अलग-अलग situation में उसका meaning change हो जाता है. So it becomes very important for us to understand the meaning of that word in the given context. Then only students it is possible to get the correct answers in the passages. So we need to understand the context. इसका एक बहुत ही simple सा example लेते हैं. For example, someone is wearing a very good t-shirt. And if I say that, wow, yeah, what a wonderful t-shirt. So what I'm doing, I'm complimenting him, appreciating him. But for example, if that boy is wearing a very bad t-shirt, बहुत अच्छा नहीं था वो, बहुत ही गंदा सा t-shirt था. And still if I say, wow, yeah, what a wonderful t-shirt. So now this time, am I appreciating? Of course not. So this becomes a taunt. So my statement is sarcastic here. My statement becomes taunting here. So that boy will have to understand कि सर ने जो बोला वो अप्रिशिएट करते हुए बोला या चौंच मारते हुए, ये तो पता चलना चाहिए ना. बस यही कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है. Now see students, dictionary meaning can also be known as a literal meaning. It can also be called as a lexical meaning. Yes, all the students do understand. English में dictionary can also be called as lexicon. Lexicon का मतलब भी होता है dictionary, and that is the reason the person who writes a dictionary will be known as lexicographer. So try to understand the art of writing a dictionary, lexicography. And lexicon का मतलब dictionary, lexical meaning, that means the dictionary meaning. अब try to understand, एक word मैंने बता दिया और उसके साथ कितने words relate हो गए. तो just सुन लो, possibly कहीं पर question आ जाए, what do we call a person, okay, who compiles a dictionary? The correct answer is lexicographer. Now students, when I talk about contextual meaning, we need to understand it can also be called as figurative meaning. Okay, figurative मतलब शब्द कुछ और है, but actual में sense कुछ और है. चलो कुछ example लेते हैं, you will come to know. For example, students, if I say time is money, if I say time is money, now tell me one thing, do I literally mean to say time is? Of course not. When I say time is money, that does not mean that I mean to say time is literally money. Of course not. When I say time is money, I mean to say that time is precious. And students, यहाँ पर मैं कौन सा figure of speech use कर रहा हूँ? I think you people might have heard about figures of speech, simile, personification, metaphor. तो यहाँ पर कौन सा figure of speech अपन use कर रहे हैं? Yes, students, when I say time is money, यहाँ पर I'm using a metaphor. Okay, metaphor. Two unlike things. When I show that this is okay, this is that. So this kind of comparison is actually a metaphor. अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है. अगर मैं लिखता टाइम इज लाइक मनी तो वो क्या बन जाता? सिमिली, isn't it? Anyway, figures of speech को भी हम लोग अपनी क्लासेस में कवर करते हैं. Let me leave that right now. Let us focus on understanding what is the importance of contextual meaning. तो टाइम इज मनी, इसका एक्चुअल रेफरेंस, एक्चुअल मीनिंग कुछ और है. चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं. फॉर एग्जांपल, यू पीपल केम टू मी, सर 10 दिन हो गए, माई इंग्लिश इज नॉट इम्प्रूविंग. और मैंने जवाब दिया, स्टूडेंट्स, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे.
What did I say? Rome. Rome शहर सुना है ना? Rome was not built in a day. Now tell me students, when I say Rome was not built in a day, okay, what do I mean to say? I mean to say Rome शहर को एक दिन में थोड़ी बना था. तो किसी भी बड़े काम को करने में you will have to keep patience. So instead of directly saying that you will have to keep patience, I said that Rome was not built in a day. So this becomes an idiomatic way of giving the answer. I guess the point is clear. Now you people just imagine, if you are not able to connect your question with that of my answer, you will think like, sir has gone mad. मैं तो सर के पास इंग्लिश की प्रॉब्लम लेकर गया and sir is talking about Rome. But students, I have given the answer. This is the power of an idiom, contextual meaning. अब सोचो students, अगर मैं कहता हूँ to become successful, what is important is you will have to sorry, to become successful you will have to move mountains. अब सोचो students, जब मैं कहता हूँ you will have to move mountains, what does it mean? Does it mean that literally आपको पहाड़ों को move करना है? Of course not. So when I say move mountains, that means you will have to put efforts. मेहनत करनी पड़ेगी, understand. Okay, you will have to walk an extra mile. You will have to walk an extra mile, isn't it? So when I say you will have to walk an extra mile, that means आपको extra मेहनत करनी पड़ेगी. That is what the meaning is. And students, if I say you will have to burn the midnight oil, burn the midnight oil. Sorry, midnight oil. So students do understand. इसका मतलब दिन रात एक करना, खूब मेहनत करना. That does not literally mean that to burn the midnight oil. इन सब का idiomatic sense होता है. शब्द कुछ और है, but sense कुछ और है. हिंदी में भी तो students कितने सारे मुहावरे होते हैं. When I say नाच न जाने आंगन टेढ़ा, does it have any relation with नाचना and all? Of course not. But when a person makes some excuse, we often use this idiom. So try to understand. हमेशा students, you people have to focus on the contextual meaning. एक ही word अलग अलग context में उसका meaning पूरी तरह से change हो जाता है. So we people have to be extra careful in that. Anyway students, multiple examples और भी हो सकते हैं. चलो एक example और लेता हूँ, okay, to make you understand. Fix. बड़ा simple सा word है, fix. Alright? Now see, if I say, I am in a fix. So when I say I'm in a fix, what does it mean? इसका मतलब है I'm in a trouble, I'm in a confusion, I'm in a dilemma, I'm not able to understand what I have to do. मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, I'm in a fix. ठीक है, समझ में आया? Confusion में होना. Second students, if I say I need to fix the problem. अब सोचो students, when I say I need to fix the problem, isn't it? I need to fix the problem. That means I need to solve the problem. तो यहाँ पर fix का meaning क्या हो गया? Solve करना. अब सोचो students, when I say the match was fixed, the match was fixed. अब एक होता है match fixing, जहाँ पर पहले से settings हो जाती है कौन जीतेगा कौन हारेगा. और एक होता है possibly when I say the match was fixed, that means dates, venue, ये सारी चीजें fix हो गई. अब देखो कितने multiple meanings possible हैं. So context plays the most important role. Recently, Prime Minister Modi was giving speech somewhere, and he had tears in his eyes. आंखों से आंसू आ गए. तो एक घंटे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, crocodile tears. Now what is the meaning? Yes, crocodile tears. अब ये समझ में आना चाहिए ना, राहुल गांधी ने इस पर टॉन्ट मारा है, right? चलिए, all the students. So the first thing is spelling, and the second is the meaning. So once you understand that meaning में केवल dictionary meaning को बयाट मत करना, try to understand the context. अब meaning में students एक और बड़ा important point आता है, that is tone. We people will have to understand the tone of the word. Some words are positive, some words are negative. एक अच्छा student हमेशा tone को समझता है. Okay, so some words can be positive and some words can be negative, right? चलिए, now tell me students, if I call you people that you are very determined. You people are very determined. अब सोचो students, अगर मैं कहता हूँ you people are very determined. Okay, determined. Positive है कि negative? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? Yes.
So when I say you people are determined, of course this becomes an appreciation because determined होना, दृढ़ निश्चयी होना, dedicated होना, okay, firm होना, that is the meaning of determined. So it becomes a positive word, determined. But now tell me students, if I tell you people are stubborn, सुना है stubborn? Stubborn का मतलब होता है जिद्दी होना. Stubborn का मतलब है जिद्दी होना. So when I say you people are stubborn, but try to understand, जो आदमी stubborn होता है, वो भी तो determined होता है. नहीं सर, मैं ये तो करूँगा ही. I'm not going to listen to anyone. That is what the meaning of being stubborn, isn't it? So stubborn person भी तो determined होता है, right? But try to understand, there is a thin line of difference between these two words. And the line is of the tone. Determined is used in positive sense and stubborn is used in negative sense. Right? Stubborn person को अपन और क्या कहते हैं? Yes, we can call him rigid. We can call him adamant. जो आदमी अड़ जाता है, उसे अपन कहते हैं adamant. Determined can be called as focused, firm, okay, resolute. कोई आदमी persistent होता है, लगातार लगे रहता है. Okay, yes, even that is the meaning of determined. So इसीलिए students, tone plays a very very important role. चलिए, let me take one more example. मुझे बताओ students, what is the difference between childish and childlike? This is one of my most favorite questions. मैं हर क्लास में पूछता रहता हूँ. Childish and childlike. What is the difference between these two? दोनों का मतलब है बच्चे जैसा, but still what is the difference? Childish and childlike. Yes, what is the answer? Actually, again, the difference lies between the tone. Childish has a negative connotation, whereas childlike has a positive connotation. That means इसका tone positive है और इसका tone negative है. When I say students childish, try to understand. जिस आदमी में just a second. Sorry. When a person shows negative qualities of a child, जब कोई बड़ा आदमी बचपना दिखाता है, सिल्ली बातें करता है, नॉनसेंस बातें करता है, तो yes, that person will be called as childish. But students, when someone shows positive qualities of a child, जैसे for example, if I say you have a childlike smile, that means your smile is very soothing, just like a child. Or for example, if I make a sentence like I appreciate your childlike curiosity. एक बच्चा होता है ना, बड़ा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, चीजें जानने की इच्छा रखता है, अंडरस्टैंड, पापा ये कैसे, चाचा ये कैसे, तो curiosity. So if a person exhibits that kind of curiosity, it becomes childlike curiosity. This is the way. And the child is often, he has a pure heart, isn't it? तो 2-3 साल का बच्चा जब पापा कहते हैं जा बेटा अंकल को कह दे पापा इज नॉट एट होम, व्हाट दैट चाइल्ड डज, वो जाकर अंकल को क्या कहता है? यस, पापा इज सेइंग दैट पापा इज नॉट एट होम. ये उसकी प्योरिटी है. तो जब किसी बड़े बच्चे में, बड़े बच्चे मतलब किसी बड़े आदमी में इसी तरह की चाइल्ड की अच्छी क्वालिटीज होती है, तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज चाइल्ड लाइक. ओके, so this becomes a positive word and this is negative. Hello, one more question here. Can you people tell me what is the difference between little and a little? What is the difference between little and a little? Yes, come on. Little and a little. What is the difference? Well, I'll tell you what is the difference. I'll give you 2 examples first. Sir, there is little hope of my passing the exam. There is little hope of my passing the exam. Second, sir, there is a little hope of my passing the exam. So try to understand the difference. The difference is little हम हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, और little अपन हमेशा यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में. So that becomes the difference. When I say there is a little hope, that means hopeless होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी उम्मीद है. Okay, for example, when I say little money, बहुत कम पैसा. But when I say I have a little money, ये मत सोचो मेरे पास कुछ नहीं है. I do have something. I have a little money. So the tone becomes positive, right? So anyway, students, by this you would have come to know that what is the importance of tone. वैसे कुछ और examples आपके सामने हैं. Yes.
these examples. I want all the students to pause it. Just have a look over these questions. Okay, and decide कि कौन से sentence पे कौन सा word use होना चाहिए. And students, ये जो pair of words हैं, they have similar kind of meanings, but the difference lies in the tone. Yes. 35 minutes की class हो चुकी है students. Next 10 more minutes. Oh, I won't have to share office space with Mrs. Singh. She can be very, what is the correct answer? Curious is a positive word, but nosy is negative. Nosy, who keeps poking his nose. Okay, हर बार students बीच बीच में interfere करना. Nosy. But curious होना, इसका मतलब है where you have a learning attitude. That is good. So, the correct answer is nosy in this sentence. Okay, that is the reason I say I won't have to share office space with Mrs. Singh. Mr. Nair had better be wary. Wary का मतलब होता है सावधान होना, cautious होना. Of his new neighbor, Miss Banerjee, he is dash. अब अगर मैं कह रहा हूँ मिस्टर नायर को सावधान होना चाहिए, इसका मतलब है डेफिनेटली जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव. क्लेवर इज अ पॉजिटिव वर्ड, क्राफ्टी इज नेगेटिव. क्राफ्टी का मतलब होता है बहुत चालाक होना, बहुत कनिंग होना, अंडरस्टैंड. ओके, बड़ा फॉक्सी होना, लोमड़ी की तरह. क्राफ्टी, चालाक. ओके, so here the best answer is clever. Clever is smart, intelligent, sharp-minded. The new saleswoman tends to be dash while dealing with customers, is scaring them away. Try to understand, जो new saleswoman है, वो तो literally customer को डरा रही है, पीछे ही पड़ गई है, understand. So try to understand. Again, the sentence has a negative tone. So enthusiastic होना is positive. Enthusiastic, where you have some enthusiasm, some josh, some zeal in you. So if you are enthusiastic, that is positive. But if you are pushy, this becomes negative. बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना, that is pushy. So here in this sentence, again the correct answer should be pushy, isn't it? चलिए students, बहुत ही शानदार discussion चल रहा है. These are some more examples. I will not be discussing them at length, but I want you people to just pause it and go through these pairs of words as well. So you will actually come to know which is positive and which is negative. And you will actually come to know what is the importance of context and what is the importance of tone as well. Yes, few more words are there. इन्हें अच्छी तरह से नोट करो and try to understand. ठीक है, पॉज करो, समझो. Right? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. Now, coming on grammar. See students, I'll not be discussing much of grammar here, but you people have to understand a few things here. When I talk about grammar, I'm not discussing grammar, but I'll be discussing grammar with respect to vocab only. Whenever we come across a new word, we need to understand that the word belongs to which part of speech. I guess आप सब students ने कभी school, colleges में parts of speech के बारे में सुना होगा, isn't it? So what is the meaning of part of speech? How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. One is noun, yes. Second is pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Interjection. Yes. These are the 8 parts of speech. Anyway, students, I'll not be discussing the meanings of this. I presume that थोड़ा बहुत आपको पता होगा. अगर नहीं भी पता है, in our course we are going to take the complete grammar also in detail. But you people have to understand one thing. Whenever you come across a new word, you people should know that any word of English will actually belong to one out of these 8 categories. कोई भी English का शब्द इन 8 में से students किसी एक category को belong करता है. Therefore, it becomes important for us to understand that a given word belongs to which part of speech. Okay? For example, जैसे one word is happiness. Okay? The second word is happy. चलो बताओ students इन दोनों में क्या difference होता है? Meaning wise, if you see, there is actually no difference. Happiness and happy, meaning wise, there is no difference at all. Okay, but what is the difference then? The difference lies in the part of speech. कहीं पर भी students अगर ness आ जाए, that actually becomes a noun. This actually becomes name of an emotion.
name of a feeling, and wherever a name is, that becomes a noun. So when I say happiness, it becomes a name. Happiness is a feeling. Okay, we all are in search of happiness. Happiness is very important in life. And what is this happy? If you are not able to judge, आप एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ, पता चल जाएगा. If I say he is a happy boy, a happy boy. So boy is a noun. Now what kind of boy he is? A happy boy. तो जब मैं कहता हूँ students, just 1 second. So when I say students boy, it becomes a noun. Now what kind of boy he is? Happy boy. So definitely happy becomes an adjective. किसी noun की quality बताना, किसी noun की quality बताना, that becomes the job of an adjective. So what is happy? Adjective. What is happiness? That becomes a noun. And for example, if I say, I teach happily. When I say, I teach happily. Now what is happily here? Try to understand. कभी भी कोई sentence आ जाए ना, you people should understand that a given word belongs to which part of speech. If you are able to understand the part of speech, believe me students, grammar की आधी problem तो वहीं पर खत्म हो जाती है. So when I say I teach happily, what is I? It becomes the subject, it becomes the pronoun, isn't it? I is a pronoun. I am Anil. Anil is noun. I becomes a pronoun. And that becomes the subject of the sentence. पता है तो well and good. Otherwise don't worry. आगे सब कुछ discuss करेंगे. What does teach? It becomes an action. Therefore it becomes a verb. I teach happily. So this becomes the right answer. So happily, sorry, answer तो दिया ही नहीं मैंने. So what is happily? It becomes an adverb. Why? Because that is showing quality of a verb. तो किसी verb की quality show करना, that becomes the job of an adverb. So students, happiness, happy, happily. The difference lies in the part of speech. So therefore it becomes important कि हमें part of speech पता होना ही चाहिए. I'll take one example to make you understand. One is advice and one is advice. Advice and advice. Now tell me students, what is the difference between these two? Meaning wise सभी students को पता होगा कि सर advice का मतलब क्या होता है? सलाह देना, suggestion. But try to understand the difference. Advice, it is suggestion, it is a noun. It becomes name of something. But when I say advise, SE, it becomes an action. It actually becomes a verb. तो जब आप किसी को suggestion देते हैं, उस action को students अपन कहते हैं advice. So you people have to understand this difference. Otherwise, you will not be able to use this word properly in a sentence. I'll take one example. For example, if I say, please dash me. So if I say, please advise me, कौन सा first या second? Please advise me. Now try to understand what should come there, a noun or a verb. Okay, bus, you will get the answer. So when I say, please advise me, I'm saying, मुझे suggestion दो, मुझे सलाह दो. That means I need to have a verb here. So here, students, the correct answer is advise. S-E वाला. But अगर मैं लिखता, please give me an advice. तो यहाँ पर students आएगा CE because I'm asking for something. जैसे मैं कहता हूँ ना, please give me an apple. Apple becomes a noun. So please give me an advice. That is the reason we need to understand. These are some very raw examples. But आप देखोगे students, इसको थोड़ा सा और समझना जरूरी है. आगे और भी questions अपन करेंगे and it becomes utmost important for us to understand the part of speech as well. Okay? And students, when I talk about part of speech, it is not only that we should know the parts of speech only, but जैसे कोई verb है, अब verb के भी multiple forms होते हैं, V1, V2, V3, isn't it? So we should know their forms also. And often students, we commit a mistake because of that as well. और कई बार students जो genders हैं, okay, या फिर कई बार singular and plural पर भी questions आने के chances हैं, even if not directly, indirectly. So I do understand there are some papers, जैसे CAT जैसे papers, ये पूरी तरह से passages based होते हैं, reading oriented. So you will not come across direct questions based on vocab. But still, you cannot undermine the importance of this.
एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं देता, इट टेक्स मल्टीपल एग्जाम्स. तो फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स vocab इज एनीवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, वायरस का प्लूरल क्या होता है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वायरस? यस, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वायरस? वायरस तो बहुत बार सुना है, पर इसका प्लूरल हमने कभी नहीं सुना है. यस, वायरस का प्लूरल होगा स्टूडेंट्स, दैट इज वायरसेस. एग्जैक्टली, वायरसेस. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरियास, इजंट इट? ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं. दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स. बैक्टीरियम जस्ट बिकम सिंगुलर और इसका प्लूरल फॉर्म होता है बैक्टीरिया. तो यू शुड नॉट मेक इट बैक्टीरियास. ओके, चलो एक और क्वेश्चन. मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि सर यू विल हैव टू टेक अ स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन. चम्मच भर के दवाई पीनी है, स्पूनफुल, सिंगुलर. अब मुझे बताना इसका प्लूरल क्या होता है. यस, द ऑप्शंस आर स्पूनफुल और स्पूनफुल्स. अब मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 चम्मच भर के दवाई पीनी है, तो यू हैव टू टेक 2 स्पूनफुल और स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन. तो विच इज द करेक्ट आंसर? प्लूरल ऑफ स्पूनफुल इन दोनों में से क्या होगा? एन आंसर इन दोनों में से ही है. ओके, यस. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर हियर इज स्पूनफुल्स. आई नो ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट सोचा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 2 चम्मच भर के दवाई पीनी है, देयर आर 2 मेथड्स. आई टेक अ स्पून, उसे भर के पीऊंगा, सेकेंड टाइम भरूंगा, फिर पीऊंगा. सेकेंड मेथड, मैं 2 चम्मच लूंगा, दोनों को भरूंगा, एक बार इससे पीऊंगा, एक बार इससे पीऊंगा. व्हाट डू वी डू इट? हम एक ही चम्मच से 2 बार पीते हैं या 2 चम्मच से एक बार? ऑफ कोर्स वी टेक ओनली 1 स्पून. सो द करेक्ट आंसर इज स्पूनफुल, इजंट इट? बस ऐसे लॉजिक के साथ आप पढ़ते रहो, अपने आप स्टूडेंट्स आप देखोगे ग्रामर विल बिकम इजी फॉर अस. द ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स इज नीडेड. मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया. प्रोनाउंसिएशन, अभी तक स्टूडेंट्स हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए. Whenever you come across a new word, first you need to understand what is the spelling. Second is the meaning, dictionary and context. Third, tone, positive, negative, and कुछ words neutral भी होते हैं, कहीं भी use हो सकते हैं. Fourth, we had a discussion about the grammatical understanding. And the fifth is, I do understand जिन exams की अपन तैयारी कर रहे हैं उनमें students pronunciation is not important because nowhere we are supposed to speak anything. I see many times students को लगता है कि sir I'm not able to speak good English, hence my English is poor. Students try to understand CAT, banking या किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, in competitive exams में we are not supposed to speak anything. So even if you are not able to speak, at least you can develop your understanding of English and still you can crack these papers. पर फिर भी जब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं हम लोग वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करना भी स्टार्ट करें. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. चलो फिलहाल कुछ सैंपल एग्जांपल्स, सम एग्जांपल. कैसे बोलेंगे? इट हैज टू बी स्पोकन एज गौमे, गौमे. ओके, आर भी साइलेंट है, टी भी साइलेंट है, गौमे. इट हैज टू बी स्पोकन एज एपिटमी, एपिटमी. इट शुड बी स्पोकन एज सटल, भी साइलेंट हियर. And it should be spoken as credulous. Spelling में D है, but the sound will be of J. Credulous. So we should not say credulous. It will be credulous. This is just to make you understand that अच्छी तरह से अगर pronunciation आता है, well and good. And now students, I'm showing you 3 questions. One by one, you people will have to solve it. Okay, 3 questions हैं. I'll not be discussing these questions very much, but I'll give you some time. आप आराम से इसको पढ़ें और सॉल्व करें. राइट, चलिए पहला क्वेश्चन. आई गिव द आंसर डायरेक्टली, मैं समझाऊंगा नहीं. डायरेक्शन भी दे रखा है एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस यूज द मीनिंग इज गिवन टू अस एंड 4 वर्ड्स में से आपको बताना है व्हिच इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट. इनअप्रोप्रिएट. ओके, अगर डिसयूज का मीनिंग नहीं पता है तो एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस यू कैन गेस. ओके, where the objects become obsolete. Obsolete मतलब पुराना हो जाना, out of fashion हो जाना.
इसका मोस्ट इनअप्रोप्रिएट कौन सा होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि प्रेवलेंट का मतलब है समथिंग विच इज स्टिल गोइंग ऑन. ओके, समथिंग विच इज गोइंग ऑन, समथिंग विच इज वाइडली यूज्ड, इसे प्रेवलेंट कहते हैं. बाकी सबका मतलब है आउट ऑफ फैशन हो जाना, खत्म हो जाना. अंडरस्टैंड? एनीवे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आगे बहुत आराम से करवाऊंगा, खूब सारे करवाऊंगा. ये तो केवल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड a few questions based on vocab. Okay, and these were actual questions of CAT, but ऐसे similar questions किसी भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं. There was a time जब CAT में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, बट अब तो स्टूडेंट्स पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है. अब CAT में डायरेक्ट क्वेश्चंस vocab के नहीं आते, बट इंपॉर्टेंस तो अभी भी है. बाकी जितने एग्जाम्स हैं, MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, BBA, IP मैट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब में vocab is still very very important directly. तो पता करो इनका मीनिंग. आई विल नॉट गिव यू द आंसर. यूज अ डिक्शनरी, फाइंड आउट. एंड दिस बिकम्स द लास्ट क्वेश्चन. पॉज इट. अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉट इजी. आई नो इन सब के मीनिंग्स आपको पता नहीं होंगे, बट इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, आगे धीरे धीरे सब आ जाएगा. ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स, वीडियो बंद मत करो, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ज़रूर सुनो. स्टूडेंट्स, vocab पर अच्छी कमांड बनाने के लिए हमें डिक्शनरी यूज़ करने की हैबिट डालनी. And whenever you use a dictionary, do understand, you are not supposed to see only the meaning of the word. Whenever you come across a new word, the first thing is, spelling तो by default होती है. Second, bracket में part of speech भी होता है. Third, the meaning is given. उसके बाद there are some sample examples as well, sentences. तो उसे भी पढ़ो, so that you come to know कि इस word को positively use करना है या negatively. And students, अगर patience के साथ हम किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे, उसके बारे में जितना दे रखा है सब कुछ पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी डोंट गो फॉर मेनी वर्ड्स, गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द वर्ड्स. ओके, अब इन vocab को, इस vocab को कैसे डेवलप करना है, व्हाट आर द टिप्स, ग्रुपिंग कैसे करनी है, रूट्स को कैसे यूज करना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को कैसे यूज करना है, स्टे ट्यून्ड विद अस. ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. तो सारे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको YouTube चैनल पर देख रहे हो तो यस, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ. कीप शेयरिंग योर ओपिनियन, कीप शेयरिंग योर लव एंड अफेक्शन, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस. एंड अपने सारे दोस्तों को जो CAT 2024 देना चाहते हैं, कीप शेयरिंग दीज वीडियोज विद देम. सी यू वेरी सून. वी आर एनीवे गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट ऑनलाइन बैच, ओके, फॉर CAT as well. Physical, online, all options are available. See you very soon. Thank you very much.